Hi students. Today we are going to learn about the third exercise in the chapter Mensuration from CBSE grade 8. So let's move on to the first question without wasting any time. The first question says that there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? अभी यहाँ पर दो बॉक्सेस दिए गए हैं, तो उन दो बक्सों में सबसे कम मटेरियल किस में लगेगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है. Now let me change the color of the pen so it's clearly visible to you guys. Yes, so given data, box number 1, box number 2. so इसका लेंथ हम ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हम ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर और हाइट ले लेते हैं 50 सेंटीमीटर्स. देन जो अदर बॉक्स है वो तो मुझे क्यूबॉइडल नहीं लग रहा है, वो क्यूबिकल लग रहा है. सो आई विल जस्ट राइट as A, which is the side of the cube equals to 50 centimeter. Now we have to find the TSA. So TSA, total surface area of a cuboid, is equal to 2 times LB plus BH plus HL. So here we have 2 times L कितना है 60 times B कितना है 40 plus B कितना है 40 times 50 plus H कितना है 50 times 40. So 2 times 60 into 40 is nothing but 2400 plus 40 into 50 will be 2000 and 50 into 40 again would be equal to, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे ये लिखने में गलती हो गया है. So 50 into 60 it will be 3000. So it will be 3000. Now let's do the addition. So 2400 plus 2000 plus 3000. 0 plus 0 plus 0 is 0. Then one more 0. Then 4. And then 7. So we get it equal to 0, 0, 8, 14 centimeter square. तो इतना मटेरियल लगेगा इसको बनाने के लिए. नाउ क्यूब जो है उसका TSA होता है 6a square. So which is nothing but 6 times a 50 का square. So 6 times 50 times 50, which is nothing but 6 times 2500 gives us 0 0 33 carat 6 to the 12, 12 plus 3 is 15. So 15,000 centimeters square. This much material will be required to make the cubical box. Now as you can clearly see that 14,800 is less than 15,000. So our answer would be this. Let's move on to the next. What कहता है a suitcase which measures 80 centimeters times 48 centimeters times 24 centimeters is to be covered with the tarpaulin cloth. Now, how many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? So let's take the length of the suitcase to be equal to 80 centimeters, the breadth to be equal to 48 centimeters, and the height to be equal to 24 centimeters.
तो अभी सूटकेस तो क्यूबॉइड ही होता है। सो फर्स्ट थिंग, अगर उसके ऊपर हमें टारपोलिन लपेटना है तो वी हैव टू टेक द सरफेस एरिया। लपेटना है मतलब उसको अच्छी तरीके से कवर करना है ताकि धूल और वाटर का उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। सो TSA of cuboid will be equal to 2 times L into B plus B into H plus H into L. So 2 times L into B. So length है 80 times breadth है 48 plus breadth is 48 times 24 plus 24 times 80. So ये कितना होगा 2 times. Now 80 times 48. So 80 times 48 हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर 8 times 8 is 64 and 8 times 4 is 32. 32 plus 6 will be 38 और ये 0 जो का तो रख दिया। 48 times 24, तो यहाँ पर साइड में हम कर लेते हैं क्योंकि मुझे 24 का टेबल नहीं आता है। So 8 times 4 is 32, 3 carry. 4 times 4 is 16, 16 plus 3 is 19. Put a 0 here. So 2 times 8 is 16, 1 carried over. So 2 times 4 is 8, 8 plus 1 is 9. Add it. So 2, 5, 1 carried, 11. So here we have 1152 plus 24 times 80. तो ये 0 पहले लिख लेते हैं and 8 times 4 is 32, 3 carry. 8 times 2 is 16 plus 3 is 19. So 1920. तो जब हम इनको ऐड करेंगे so 0 plus 2 plus 0 is basically what? 2. Now 4 plus 5 is 9, 9 plus 2 is 11. 1 carried over. 9 plus 1 is 10. 10 plus 1 is 11. 11 plus 8 is 19. 1 carried over. So 3 plus 1 is 4, 5, 6. So here we have 2 2s are 4, 2 2s are 1, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 1 carried, 2 6s are 12 plus 1 13. So हमें मिला है 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये हो गया एक सूटकेस का एरिया। ना उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जिससे हम वो कवर बना रहे हैं वो एक है रेक्टेंगुलर शीट, और रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया है वो बेसिकली किस कलर का है? दैट इज नन अदर, नॉट कलर का, इट्स अ रेक्टेंगुलर इन शेप। कलर का तो हम किसी भी कलर का डाल सकते हैं। विड्थ इज 96 सेंटीमीटर और लेंथ को लिखते हैं L। तो अभी ये एक का आ गया है और ऐसे 100 सूटकेस को कवर करना है। सो व्हाट विल आई डू? tarpaulin required for 100 suitcases. So I'll write here for 100 suitcases. What will we do for 100 suitcases? We will basically multiply 13824 times 100 to be equal to L times 9. So 13,824 times 100 equals length, which we have denoted as L times 96. So L will be equal to 13824 times 100 divided by 96. तो अभी हमें इसे करना है काट चार्ट।
तो कट चट करने में मुझे बहुत मजा आता है. So let's say this both 13,824 and 96 are divisible by 4. How did I say that it is divisible by 4? तो 4 का divisibility rule ये है कि लास्ट के जो 2 digits है वो 4 से divisible है या नहीं. So yes, this 24 is divisible and this 96 is also divisible. So I can divide both the 824 times 100 divided by 96. तो इसको हम अभी 4 से डिवाइड करेंगे. हाउ डू वी फाइंड द डिविजिबिलिटी ऑफ 4? अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. So let's divide this 96 by 4. So 4 2s are 8, 1 carried, 4 4s are 16. Now here we go. 4 3s are 12, 1 carried, 4 4s are 16, 2 carried over, 4 5s are 20, 2 carried, and 4 6s are 24. Now 24 is also divisible by 4 and जो 56 last 2 digits है वो भी divisible by 4 है. So let's divide it by 4. So now 4 8s are 32, 2 carried. 4 6s are 24, 1 carried. And 4 4s are 16. Yes. Now क्या ये number 6 से divisible है या नहीं है? We have to check it. The number should be divisible by 2 and 3 both. So 6 plus 4 is 10, 10 plus 8 is nothing but 18. So this number is divisible by 6 completely. 6 1s are 6, 6 1s are 6, 2 carried, 6 4s are 24, 2 carried, and 6 4s are 24. So the length is nothing but 14400 centimeters. Here we have our answer. So ये जो रेक्टेंगुलर कपड़ा होगा जिससे टारपोलिन कट किया जाएगा 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए, उसकी लेंथ होगी 14,400 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में भी लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय 100, which gives us 144 meters in total. ये आ गया हमारा आंसर बड़ी मुश्किल के बाद. So let's move on with the third question. Question number 3 हम स्टार्ट करते हैं. Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeters square. So given data है surface area of a cube. So I will directly write it as 6a square is equal to 600 centimeters square. 6a square क्या है? Surface area. Surface area of cube is equal to 6a square. Now what we have to find? Find the side. So we have to find a equals to what? So a is nothing but the side. So easy peasy lemon squeezy. देखते हैं. 6a square is equal to 600. So a square will be equal to 600 divided by 6, which is nothing but 100. Now a square is equal to 100. So taking square root on both sides. Under root a square is equal to 100 का under root. So a equal to होगा 10. Actually plus minus 10 होगा, but क्योंकि हम dimensions negative में नहीं लेते हैं, we will take this length of the side to be equal to positive 10 square. हो गया. Third question again. So Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth, and height of 15 meter, 10 meter, and 7 meters respectively. From each can of paint, 100 meters square of area is painted.
How many cans of paint will she need to paint the room? तो डेनियल बेसिकली लड़की का नाम है या लड़की का नाम है पता ही नहीं चलता बाहर गोरे लोगों का है. Let's come back to math. So given data, I will just write it like this. Given data. अगर given data लिख देते हो तो आधा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं. So L equals 15 meters, B equals 10 meters, and H equals 7 meters. Now, अभी उसने सारे वॉल्स और सीलिंग पेंट की है. ऑब्वियसली फ्लोर तो पेंट करेगी नहीं वो. नाउ तो हम क्या करेंगे फिर से CSA प्लस द एरिया ऑफ द सीलिंग. So CSA of cuboid, which is room, उसको मैं रूम भी लिख लेता हूँ, प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग. तो CSA कितना होगा? CSA है 2 times H times L plus B प्लस एरिया ऑफ सीलिंग कितना है? L times B. So ये 2 times सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी वैल्यू. 7 times L है 15, B है 10 प्लस लेंथ कितना है? 15 times B कितना है? 10. So 14 times 25 plus 15 times 10 is 150. So ये कितना होगा? 14 5s are 70, 7 carried, 14 2s are 28, 28 plus 7 35 plus 150, ये होगा equal to 0 plus 0 0, 5 plus 5 is 10, and 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5. So 500 मीटर स्क्वायर इतना है एरिया सब रूम के वॉल्स. इन्होंने कहा है कि 1 कैन में 100 मीटर स्क्वायर पेंट हो सकता है. तो 500 मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर में कितने कैन लगेंगे? तो मैं इसको लिखता हूं x. तो अभी क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इनटू दिस इक्वल्स दिस इनटू दिस. So 500 times 1 equals 100 times x. x तो बड़ा डिस्को हो गया है, बट कोई बात नहीं, आप समझ लोगे. So it's 500 divided by 100. So 1s are 5s are. तो x कितने कैन लगेंगे? हमें लगेंगे 5 cans in total. So हो गया क्वेश्चन नंबर 5. So question number 6 says that describe how the two figures at the right are alike and how are they different. Which box has larger lateral surface area? Lateral surface area मतलब curved surface area, CSA भी लिख सकते हैं. तो अभी इनमें सेम क्या है? सेम तो इनका मुझे हाइट दिख रहा है बस, which is 7 centimeter. 7 centimeter. Now how are they different? Different तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं इसमें. सबसे पहला तो this first is cylinder, the second one is cube. इसका बेस जो है वो सर्कल है सिलेंडर का, और इसका बेस जो है वो स्क्वायर है. नाउ लेट्स फाइंड आउट द सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस टू फिगर्स. तो यहां पर लिख लेता हूं मैं सिलेंडर. हैंडराइटिंग मेरा थोड़ा खराब है, थोड़ा नहीं बहुत खराब है, मुझे अच्छे से कूटा नहीं मेरे टीचर ने हैंडराइटिंग वाले, नहीं तो अच्छे हो जाती. सो गिवन डेटा गिवन डेटा है इसका हाइट इज 7 सेंटीमीटर्स.
रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायमीटर दिया गया है 7, so diameter is always 2 times of radius, or you can say radius is equal to always half the size of diameter. अभी क्यूब का क्या है? क्यूब का ए दिया, ए लेते हैं कोई भी एक एज which is 7 सेंटीमीटर। So lateral surface area of cylinder is nothing but equal to, so I will write LSA equal to 2 pi RH, इसका होता है equal to 6a, सॉरी 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर तो टोटल सरफेस एरिया होता है। So 2 times 22/7 times R has 7/2 times H is 7. So 7 7 cut, 2 2 cut, 22 times 7 is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी LSA ऑफ क्यूब कितना होगा? 4 times a का स्क्वायर, so 7 का स्क्वायर, so it's 4 times 49, so it gives us 4 9s are 36, 3 carried, 4 4s are 16 plus 3 is 19 centimeters. So of course 196 is greater than 154, so cube has larger lateral surface area. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है क्वेश्चन नंबर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 says that a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? मतलब एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो क्लोज है, मतलब ऊपर से भी और नीचे से उसको एक शीट ऑफ मेटल से बनाया गया है, तो वो कितना है? सो बेसिकली लेट्स इनिशियली राइट डाउन द गिवन डेटा। गिवन डेटा है हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर्स और रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर। तो हमें इसका निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड का है, मतलब इसका टॉप सर्कल का एरिया भी लेना पड़ेगा और बॉटम सरफेस बेस एरिया जो सर्कल में रहेगा वो भी लेना पड़ेगा। सो इट्स नथिंग बट 2 by r। तो डाल देते हैं वैल्यूज। 2 times 22/7 times रेडियस इज 7 times 7 plus 3, so 7 7 कैंसिल हो गया। 2 times 22 is 44 times 10, so it's nothing but 440 मीटर स्क्वायर। ये है टोटल एरिया, टोटल क्लोज्ड सिलेंडर का सरफेस एरिया 440 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है द lateral surface area of a hollow cylinder is 4224, मतलब 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। It is cut along its height and formed a, a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर। Find the perimeter of rectangular sheet। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन को समझना है कि एक हॉलो सिलेंडर था, एक हॉलो सिलेंडर था जिसको उसके हाइट के अलोंग कट कर दिया गया। तो अगर हम यहां से इसको कट करते हैं, जस्ट इमेजिन, आई चेंज द कलर ऑफ द पेन, सो जस्ट इमेजिन इफ वी कट इट फ्रॉम हियर, इस पार्ट से अगर हमने इसको कट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, स्प्रेड होके हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस।
तो ये जो हाइट है ये इसका विड्थ हो गया, रेक्टेंगुलर शीट का विड्थ हो गया, जो कितना है, इधर से लिख लेता हूँ 33 सेंटीमीटर। और जो सरकमफरेंस है सिलेंडर का वो हो जाएगा लेंथ। सो L इज इक्वल टू 2πr। ना गिवन डेटा क्या क्या है? सो lateral surface area, so CSA of cylinder is equal to 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट उसका हो जाएगा 33 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज कट अलोंग द हाइट। और जो शीट खुल के बना है वो बना है विड्थ 33 सेंटीमीटर के साथ में। ना हमें क्या निकालना है अभी? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 times L plus H, या B लिख देते हैं इसको फिलहाल के लिए। इसका B और H दोनों भी इक्वल ही रहेगा। I'll just write it for B as for now. Now L निकालना है हमें, तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है? 2πRH जो कि कर्व सरफेस एरिया है वो है 4224। तो जब हमें पता है कि 2πr जो कि सरकमफरेंस है वो लेंथ के इक्वल रहेगा, तो मैं उसको लिख देता हूं L टाइम्स H is equal to 4224. So L will be equal to 4224 divided by 33. So 11 threes are 33, 11 threes are 33, 9, 11 eights are 88, 4 carried, 11 fours are 44. Now L is nothing but what? So L is equal to 384 by 3, which is nothing but 1, 2, 2 carried, 8 the 128 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पता नहीं इस साइड में आते आते सब फिसलने लग जाता है राइटिंग मेरी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 2 times L plus B, which is nothing but 2 times length is 128 plus B is nothing but 33, 2 times 1 carried 6 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 टू 322 सेंटीमीटर्स। ये हो जाएगा पेरीमीटर। नाउ let's move on to question number 9. So question number 9 says that a road roller takes 750 complete revolutions to move over a layer of to level a road। मतलब एक रोड रोलर ने 750 रिवोल्यूशंस लिए हैं एक रोड को लेवल करने में। बेसिकली अगर हम देखें तो रोड कैसा होता है? रोड एक रेक्टेंगल की शेप में होता है। इस रोलर ने कितने रोटेशन लिए? 750 रोटेशंस। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter। तो लेंथ जो है, जस्ट इमेजिन अभी ये रोलर का टायर निकाल रहा हूं मैं। इमेजिन करो, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट इमेजिन दैट दिस इज अ रोड रोलर टायर। अगर इसका लेंथ दिया गया है 1 मीटर, तो ये तो
सिलेंडर का हाइट हुआ 1 मीटर, सो सिलेंडर height is equal to 1 meter and total revolution, अभी इन्होंने क्या कहा है कि डायमीटर है 84 सेंटीमीटर्स, जो कि कितना होगा 0.84 meters, because whenever it is in centimeter you have to divide it by 100 to convert it into meters. So radius will be equal to 0.84 divided by 2, which is nothing but 0.42 meters. तो अभी रेडियस आ गया है. Now what exactly we want to find? The area of the road. तो उसके लिए इसको हम लिखते हैं L, और ये तो 1 ऑलरेडी है. So area of road is equal to what? L times 1. और L किससे आएगा? ये आएगा इसके सरकमफेरेंस से टाइम्स 750. क्यों सरकमफेरेंस? क्यों? बिकॉज जब ये रोलर मूव होगा, रोलर मूव होने के बाद ये इस पॉइंट से चालू होगा और सेम पॉइंट पे एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ही आएगा. सो दिस, लेट्स इमेजिन इफ दिस इज 1 रिवोल्यूशन. तो रिवोल्यूशन जब होगा तो गाड़ी हमेशा आगे चलती है, राइट, रिवोल्यूशन होने के बाद, और वो उतना ही चलती है जितना चक्के ने टर्न किया है. तो लेट्स से 2 pi r is equal to L, and L जो अगर हम कंप्लीट ले रहे हैं तो we have to multiply this 2 pi r with 750. Why? Because क्योंकि इसने लिए है in total 750 revolutions. So L will be equal to 750 times 2 times 22 by 7 times R. R is nothing but equal to 0.42. Now 7 on the 7, 0.06. ये आ गया जब हम डिवाइड करेंगे 0.42 को 7 से. Now let's say this 750 into 2 is 1500 times 22 times 0.06. तो 0.06 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1500 के साथ, क्योंकि ये दो जीरोस है, ये दो जीरोस है, तो ये इसके डेसिमल को हटा देंगे. So we can directly multiply the 6 with 5. 6 5 the 30, 3 carried. 6 1s are 6 plus 3, 90 times 22. So 9 times 2 is 18. 1 carried over. 9 times 2 is 18 plus 1 19. So ये है बेसिकली 198 मीटर है इस लेंथ रोड का लेंथ, और एरिया कितना होगा 1 times 198, which is nothing but 198 meter square. So we got the area of the road. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज पुट a message in the comment box. I will make a separate good explanatory video for this particular question or any question that you haven't understood. Now let's move on to the last question. So last question क्या कहता है? A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height is 20 centimeter. तो कंपनी जो है सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाती है जिनका बेस डायमीटर है 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 20 सेंटीमीटर. कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter away, 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? So अभी फर्स्ट है,
I will try to take given data for container. इसका हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर्स, इसका डायमीटर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस कितना होगा 14/2 which is 7 centimeters. अभी let's talk about the label. So now data for the label will be given by, I will just write it as data for label. तो ये तो बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही है, तो इसका हाइट हम ले लेते हैं 20 - 2 - 2. क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर ऊपर से काटा है, 2 सेंटीमीटर नीचे से काटा है, सो वी आर गोइंग टू गेट द हाइट इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, और रेडियस जो का त्यो है which is 7 centimeters. Now इसका एरिया कितना होगा, so CSA of सिलेंडर, क्योंकि हम टॉप एंड बॉटम एरिया नहीं ले रहे हैं लेवल में, so it will be equal to 2 pi r into h. So लिख देते हैं 2 times 22/7 times radius 7 times 16. 7 7 कट हो गया. Now 16 times 2 is how much? 32 times 22. So 22 times 2 is 44, 4 carried. 22 times 3 is 66, 66 plus 4 is 70. तो ये लेवल का एरिया जो है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.3 को खत्म कर दिया है, और अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में. तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड आपको अगर पसंद आया है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं आया है तो अनलाइक का बटन दबा ही दीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.